Hello everyone. Today I'll be talking about the constancy of speed of light in vacuum. आइंस्टाइन ने अपने एक पेपर में इसे एक पोस्टुलेट के हिसाब से यूज किया था। मैंने भी अपने एक प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात की हुई है। सो लेट्स अंडरस्टैंड a little more about this. इसे समझने के लिए we will have to understand a little about relative velocity or relative speed. और उसे समझाने के लिए I have a very interesting example. Think of a wide room and the room has two conveyor belts या फिर तुम ट्रेवलेटर्स भी कह सकते हो. Let's say on the first travelator we have the Joker and on the second travelator we have the Batman. The travelators can operate at a single speed, that is 2 kilometers per hour. Now the Batman and the Joker were told to step on those travelators at the exact same time. अब थोड़ी देर बाद जब जोकर बैटमैन की तरफ देखेगा तो व्हाट डू यू थिंक, जोकर को क्या लगेगा? यस, दैट द बैटमैन इज एट रेस्ट. क्यों? जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ट्रेवलिंग एट द एग्जैक्ट सेम स्पीड. बैटमैन जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जोकर भी उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. इसीलिए जब जोकर बैटमैन की तरफ देखेगा उससे ये लगेगा कि द बैटमैन इज एट रेस्ट. सो द वेलोसिटी ऑफ बैटमैन विथ रेस्पेक्ट टू जोकर विल बी जीरो. सिमिलरली अगर बैटमैन जोकर की तरफ देखेगा उसे भी कुछ ऐसा ही महसूस होगा कि द जोकर इज एट रेस्ट. विद सिमिलर केस, let's bring in light. Now we will be having a battle in between the flash and the laser light. Let's say we have two long tracks. On the first track we have the laser light mounted and on the second track we have the flash. हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि the flash can run at a speed very close to the speed of light. To be very clear, अगर किसी भी बॉडी के पास मास है, it can never be accelerated to the speed of light. This is just a hypothetical situation to understand things. Now the race is about to begin. On your mark, get set and go. What do you think? Flash के point of view से light कैसे दिखेगी? Do you think that Flash will be able to see the light crawling in front of him? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि Flash को light बहुत ज्यादा धीरे धीरे मूव करते हुए दिखेगा? Which is not at all true. And this is what exactly I wanted to convey. कि no matter how fast you are going or at what acceleration you are going, तुम्हें हर एक पर्सपेक्टिव में जो लाइट की स्पीड है हमेशा तुम्हें 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड ही दिखेगी. If the flash tries to observe the speed of light, it will be 3 lakhs kilometers per second. And this is what I meant by the constancy of speed of light in vacuum for all the observers. पर बाकी फैक्टर्स जैसे कि स्पेस, टाइम, लेंथ, ये सब अपने आप को चेंज करेंगे सो दैट द स्पीड ऑफ लाइट स्टेज कांस्टेंट इवन फॉर फ्लैश. चेंज ऑफ लेंथ एंड टाइम डिपेंड्स ऑन द लॉरेंस फैक्टर. First, let's discuss about the change in time for any object moving at a velocity v. The formula for time dilation we have is this. Here, the capital T represents time from the stationary perspective. The small t represents time from the moving perspective. And gamma is the Lorentz factor. Gamma is expressed as this. Here, v represents the speed of the object. C is obviously the speed of light in vacuum. अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हैं, we will get the Lorentz factor. और अगर हम लॉरेंस फैक्टर को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, we can get a idea about the time dilation for the moving object. Let's say in this case we have the flash which can run at a speed of 99.998% the speed of light. V will be equal to 0.99998 C, where C is the speed of light in vacuum. If I put this value in this formula, I will get the value of Lorentz factor to be 158.1. और अगर Lorentz factor की वैल्यू मैं इस टाइम डायलेशन की इक्वेशन में पुट करूं, then I can get an idea about the time dilation between the flash and for an object who is stationary or who is at rest. So finally I have this and I can conclude that for every minute passed for the flash,
It will be equivalent to 158.1 minutes for someone who is at rest. Similarly, 1 day passed for the flesh will be 158.1 days passed for someone who is at rest. If you are moving faster through the space, time will tick slower for you. Similarly, if we talk about the length contraction, we have this formula where L0 represents the actual length of the object and L is the length perceived for flash or for the moving object. यहाँ पे अगर हम लॉरेंस फैक्टर की वैल्यू पुट करते हैं we will get something like this. So a 1 kilometer long object from a stationary perspective will be equivalent to 6.34 meters for flash. जो चीज 1 किलोमीटर लॉन्ग है फ्रॉम स्टेशनरी पर्सपेक्टिव वो वही सेम ऑब्जेक्ट फ्लैश के लिए 6.34 मीटर्स की दिखेगी एंड दिस विल नॉट बी एन ऑप्टिकल इल्यूजन. अगर हम बहुत ज्यादा तेज ट्रैवल करते हैं थ्रू स्पेस लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर लेंथ स्क्वीज हो जाते हैं.